डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 10, 9 रिएक्शंस हम कल इसमें स्टडी कर चुके हैं। रिएक्शन नंबर 10 हम इसमें स्टडी करेंगे। रिएक्शन नंबर 10 है synthesis of amines. Synthesis of amines. Number first reaction, alkyl halide CH3CH2Cl react with ammonia. Hydrogen substituted, hydrogen ion substituted by Cl atom, and product is formed CH3CH2NH2, HCl removed, primary amine to be formed. One hydrogen of ammonia substituted by halogen atom, primary amine to be formed. Secondary reaction CH3 CH2NH2 mean primary amine react with alkyl halide, hydrogen substituted by halogen atom, and secondary amine to be formed and HCl removed. Secondary amine. Reaction number 3 is secondary amine CH3CH2NH, CH3 positive, CH3Cl alkyl halide, hydrogen substituted by halogen atom, and product is CH3CH2 and CH3CH3 tertiary amine, and HCl removed. Last reaction, tertiary amine CH3CH2 and CH3 positive, CH3Cl. We know that nitrogen have a lone pair of electrons, CH3 positive charge, Cl negative charge. So alkyl group add more electronegative nitrogen atom. So product is CH3 CH2 and CH3 positive charge, Cl negative charge. Product name is quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt. So dear students, synthesis of amines completed 4 reactions. Number first reaction is alkyl halide react with ammonia and hydrogen ion substituted by halogen atom, 1 degree amine to be formed. Second reaction is primary amine react with alkyl halide and hydrogen atom substituted by halogen atom, secondary amine to be formed. Number third reaction is secondary amine react with alkyl halide and hydrogen atom substituted by halogen atom, tertiary amine to be formed. And last, no hydrogen atom on nitrogen atom, lone pair of electron present on nitrogen atom, CH3Cl react with tertiary amine,
react with tertiary amine. CH3Cl react with tertiary amine. Nitrogen atom have a lone pair of electrons. Alkyl group add nitrogen atom and product form quaternary ammonium salt. Last nucleophilic substitution reaction is number 11, name reaction Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. This reaction is a name reaction and most important for exam. Friedel-Crafts reaction completed through catalyst. Benzene react with alkyl halide CH3Cl and the product is formed alkyl benzene and HCl removed. Here catalyst is LCl. Friedel-Crafts reaction catalyst is LCl3. Anhydrous LCl3 aluminum chloride. CH3Cl react with benzene, HCl removed and product is toluene. Or other name is methyl benzene. Number second reaction is benzene react with CH3CH2Cl in the presence of AlCl3 and product is ethyl benzene and HCl removed. Reaction number third is benzene react with isopropyl chloride in the presence of AlCl3 and product is isopropyl benzene and HCl removed. So dear students, Friedel-Crafts reaction example number first, second and third, methyl benzene, ethyl benzene and isopropyl chloride. First reaction, second and third reaction completed in the presence of AlCl3, aluminum chloride. Mechanism, dear friends, Friedel-Crafts की मैकेनिज्म की स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो हम इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं. जो हमने रिएक्शंस कंप्लीट किए उनमें से कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसके मैकेनिज्म हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है इसमें बेंजीन और इसकी रिएक्शन हमने की है आइसोप्रोपिल क्लोराइड से. वी नो दैट HCl removed and product is isopropyl benzene. Isopropyl benzene. Mechanism of this reaction. Step first step,
alkyl halide react with AlCl3. Alkyl halide react with AlCl3 and carbocation to be formed. And AlCl4 negative ion also formed. AlCl3 act as a lattice acid and Cl atom also add AlCl3. So partial negative charge show AlCl4 and partial positive charge show isopropyl group. So isopropyl carbocation formed. Isopropyl carbocation formed on first stage. And second step of this reaction, isopropyl carbocation react with benzene. In second step, isopropyl carbocation react with benzene. Double bond of benzene, electrons shift on this carbon atom. So this carbon atom show partial negative charge. So dear students, positive charge carbocation attack on this carbon atom and this product is formed. This product is formed. Partial positive charge on this carbon atom because electron pair shift on this carbon atom. So electron deficient carbon atom show positively charged. Next step, dear students, step number 3 of this reaction is so dear students, ये जो प्रोडक्ट हमने स्टेप नंबर 2 में बनाया है, यह एक रिजोनेंस शो करता है. इस प्रोडक्ट में रिजोनेंस कंप्लीट करते हैं और रिजोनेंस कंप्लीट करने के बाद में इसमें प्रोडक्ट बनता है. तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. सो lone pair of electron, so bond pair of electron shift on electron deficient carbon atom and electron deficient carbon atom change and positively charged show this carbon atom. Next, positively charged carbon atom mean electron deficient center. Bond pair of electrons shift on this carbon atom. So
double bond prepare, and now positively charged shift on this carbon atom. Because double bond shift on this carbon atom, so electron deficient center changed and partial positive charge show on this carbon atom. Next step, dear students, कार्बन एंड हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास, और यहाँ पर एक बॉन्ड का प्रिपरेशन हो जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा हम शो कर सकते हैं। Reasonable structures, reasonable structures, and resonance hybrid. Resonance hybrid. And the last step is AlCl3, sorry, AlCl4 negative ion. Prepare on first step, used in last step. Cl negative ion takes on H positive ion and bond electron shift on electron deficient carbon atom. Electron deficient carbon atom. HCl removed and product is formed isopropyl benzene. Product is formed isopropyl benzene. Isopropyl benzene. So dear students, Friedel-Crofts रिएक्शन की मैकेनिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको स्टडी करनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, जो आप घर पे सोल्व करना, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप दे सकते हैं। क्वेश्चन इज complete given reaction and draw reasonable structure by mechanism of this reaction. Complete given reaction and draw reasonable structure by mechanism of this reaction.
benzene react with tertiary butyl chloride, anhydrous LCl3 प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपको बताना है। इसमें जो मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है उस मैकेनिज्म को, जैसा कि आपको फ्रीडेल-क्रोफ्ट रिएक्शन में एक मैकेनिज्म इसमें आपको बताई गई है, उस मैकेनिज्म को आपको कंप्लीट करना है इस रिएक्शन की। बेंजीन रिएक्ट विद टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ LCl। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम पार्ट बी हम इसमें स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस में। नंबर फर्स्ट पार्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट की है। नंबर बी पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन reaction. So dear students, elimination reaction is known as beta elimination reaction. Now first reaction is CH3CH2Cl and second reaction is CH3 CH2Cl. This reaction in this reaction alkyl halide react with alcoholic KOH. In this reaction alkyl halide react with alcoholic KOH and two substituent eliminate in this reaction hydrogen and Cl. Hydrogen and Cl remove alpha carbon and beta carbon. Alpha and beta carbon. So HCl removed in this reaction, hydrogen removed beta position and Cl removed alpha position. So HCl removed and product formed alkene. Second reaction, in beta position hydrogen removed and alpha position Cl removed. HX means hydrogen halide removed and product is formed alkene. Ethene and propene. Reactivity order. Reactivity order of this reaction. If halogen same, then reactivity order is, if halogen same, then reactivity order is RCH2X, RCHRX and RCRX. Mean 1 degree, 2 degree and 3 degree. So order of reactivity is 1 degree, 2 degree and 3 degree. 3 degree easily give elimination reaction
because positive inductive effect present greater than 1 degree and 2 degree alkyl halides. So easily bond dissociate and easily halogen ion removed. So 3 degree alkyl halide easily give elimination reaction. If alkyl group same, then if alkyl group same, then reactivity order is RF, RCl, RBr and RI. If alkyl group same, then RI easily give elimination reaction because electronegativity of iodine is less than BrCl and F. So bond dissociate easily than RBr, RCl and RF because electronegativity of iodine atom is less than RF, Cl, Br. So Ri easily bond dissociate and easily give elimination reaction. Dear students, other elimination reaction CSL, CS2 CS3 react in the presence of alcoholic KOH. इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं वेरी मोस्ट रिएक्शन. Two substituent alkene is formed on this reaction. Number first, HX removed, HCl removed, hydrogen removed in this position. So product is formed 2-butene, if hydrogen removed in this position, so product is formed 1-butene. In this reaction, more substituent alkene is formed major product and less substituent alkene formed minor product. So this product is a major product and this product is a minor product because two alkyl substituent present on 2-butene, so it is formed major product and 1-butene present only on one ethyl substituent, so it is formed in minor product. This rule is known as Sath-Zepf's rule. इस रूल को हम सेथ-ज़ेप्फ रूल के नाम से जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन में आपने स्टडी की है सेथ-ज़ेप्फ रूल को, और इसमें हमने एक रिएक्शन के थ्रू इस रूल को समझाया है. 2 chlorobutene react with alcoholic KOH, then 2-butene and 1-butene mixture product is formed. Major product is 2-butene because
maximum number of alkyl substituent present, two methyl substituent is present, so it is formed in major product, and one butene is formed minor product because only on one alkyl substituent present in one butane. This rule is known as Selzek's rule. So dear students, जो क्वेश्चन आज पूछा गया था आपको उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप आंसर इसमें आप दे सकते हो। अपनी स्टडी जो है वो लगातार जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है वो अभी और लंबा हो सकता है, अभी इसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप सीनियर क्लास में अच्छे मार्क ला सको, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आप लगातार जारी रखिए और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।